Hello friends, welcome back to Indoor Learning Academy. We are again back with a new video for Class 1 English Unit 6. So let's start. If I were an apple, learn, recite and enjoy this poem. If I were an apple and grew on a tree, I think I should drop down on a nice boy like me. I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. So children, what is this telling here? This is telling here that, can you see this boy? This boy is telling that, काश मैं एक एप्पल रहता. If I were an apple, काश मैं एक एप्पल रहता, पेड़ पे बड़ा होता. Now children, what do you mean by grew? Grew का मतलब होता है बड़ा होना. काश मैं एक एप्पल रहता और मैं पेड़ में बड़ा होता. I think I would drop down. मुझे लग रहा है मुझे नीचे गिर जाना चाहिए. I think का मतलब हो रहा है लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे नीचे गिर जाना चाहिए. ऑन ए नाइस बॉय लाइक मी, एक अच्छे बॉय जैसे मेरे जैसे बॉय के ऊपर जाके गिर जाना चाहिए. आई वुड नॉट स्टे देयर, आई वुड नॉट स्टे देयर, गिविंग नोबडी जॉय. अगर मैं पेड़ पे रहूँगा तो मैं किसी को खुशियाँ नहीं दे पाऊँगा. ठीक है, अगर मैं किसी बच्चे पे जाऊँगा तो उसका भी पेट भर पाएगा. आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक ही बार नीचे गिर जाऊँगा. एंड से ईट मी माई बॉय, eat me my boy. So what is this last line telling here? This last line is telling that एक ही बार मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं बोलूंगा eat me my boy, eat me my boy. So let's read once again. If I were an apple and grew on a tree, I think I would drop down. I would drop down on a nice boy like me. I would not. What is this children? Would not. इसको बोलते हैं अपन वुड और नॉट. ये आपको शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे. ओके, गिविंग नो बडी जॉय, आई वुड फॉल डाउन एट वंस. अगेन यू कैन सी हियर, दिस इज अगेन आई वुड. ये सारे आपके शॉर्ट फॉर्म्स हैं. ओके, फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी बाय बॉय. सो लेट्स रिपीट दिस. इफ आई वेर एन एप्पल and grew on a tree, I think I would drop down on a nice boy like me. I would not stay there, giving nobody joy. I would fall down at once and say, eat me, my boy. Let's see what is there in the next page. New words. So children, what are the new words that we have learnt in this poem? Apple, boy, eat, drop and joy. Let's repeat. Apple, boy, eat, drop and joy. Now children, what is apple? Apple is a fruit. Apple is an fruit. And what is the color of an apple? The color of an apple is red. आपने यहाँ पर भी देखा apple, right? So what is the color of an apple? The color of an apple is red. Now this is boy. Now children, what do you mean by boy? Boy का मतलब होता है लड़का. Can you see this? यहाँ पे भी दिया हुआ है छोटा सा boy, nice boy, cute boy. ईट का मतलब होता है खाना. ड्रॉप मतलब गिरना. जॉय मतलब हैप्पीनेस. लेट्स रीड. आई लाइक टू ईट एन एप्पल. लेट्स रिपीट. आई लाइक टू ईट एन एप्पल. मुझे एप्पल खाना पसंद है. वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय. वी क्लैप आवर हैंड्स विद जॉय. जब हम लोग खुश होते हैं तो क्या करते हैं? खुशी से हम लोग अपने हैंड्स क्लैप करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. Questions and answers. Let's start with question number 1. Where is the apple? Question number 1 is, where is the apple? The apple is on the tree. Where is the apple? आपको दिख रहा है? The apple is on the tree. Now let's move to the second question. Where is the boy? Where is the boy? The boy is on the tree. The boy is ऑन द ट्री. चिल्ड्रन, यहाँ पे इमेज आपका कट गया है. मे बी आपकी बुक में अच्छे से दिया होगा. या इस पिक्चर में बॉय ट्री पे बैठा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे द बॉय इज ऑन द ट्री दिया हुआ है. ठीक है, आप कोई दूसरी पिक्चर रेफर करेंगे उसमें नीचे भी बैठा होगा वो. ओके, देन यू कैन राइट द बॉय इज अंडर द ट्री. बट इस पिक्चर में ऊपर दिया हुआ था इसलिए मैंने ये वाला आंसर ऑन लिखा है. वेयर इज द बॉय? द बॉय इज ऑन द ट्री. हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल? बॉय को एप्पल कैसे मिल सकता है? The boy can get the apple by climbing the tree. पेड़ पे चढ़ने से उसको एप्पल मिल सकता है. Now let's talk. Do you like apples? Children, do you like apples? Yes, of course we all like apples.
Have you ever climbed a fruit tree? क्या आपने कभी fruit tree पे ऊपर चढ़े हो? Yes, we always do that, right? Let's move ahead. Let's share. Fill in the blanks. If I were a bird, अगर मैं bird रहता, I would क्या करता? अगर मैं bird रहता तो fly करता या रोता? Bird क्या करता है? Bird fly करता है. तो what will be the correct answer? अगर मैं bird रहता तो मैं fly करता. Okay children, so please complete this in your book with the help of the pencil. If I were a bee, अगर मैं मधुमक्खी रहता तो क्या करता? बुज़ करता या बर्ड के जैसे आवाज करता? बज़ करता. So what is the correct answer? बज़. मक्खी कैसे करती है? बीज़ करती है ना. So if I were a bird, मतलब अगर मैं बर्ड रहता तो मैं क्या करता? I would fly. If I were a bee, I would buzz. Now let's move to the next page. Let's read and write. What is this children? This is S, T, U and V. Let's start writing this S. So what you have to do? Take your pencil and slowly connect the dots. This become your S. This is T. This is U. Make sure that you're doing with the help of the pencil, and this is letter V. S, T, U and V. So children, you have to complete this in your book, and rest of the two lines you can complete by yourself. Let's move ahead. Say aloud. जो जो से अपने को बोलना है. Apple, draw, dew, ball, people, grew, few, call, ripple, through, me and fall. Let's repeat. Apple, drew, deep, ball, people, grow, few, call, ripple, through, mew and fall. Now let's move to the next page. What fun! Fill in the letters to complete the crossword puzzle. Now what you have to do here is, यहाँ पे crossword दिया हुआ है, puzzle दिया हुआ है. Use these pictures as clues to find the fruit. यहाँ पे fruits भी दिए हुए हैं and this is a crossword. What you have to do? You have to fill this. Let's start. What is this? This is orange. What is the spelling of orange? O-R-A-N-G-E, orange. O-R-A-N-G-E becomes orange. Next, what is this? Banana. B-A-N-A-N-A, banana. Let's repeat. B-A-N-A-N-A, banana. This is grapes. G-R-A-P-E-S, grapes. G-R-A-P-E-S, grapes. Now we have, what is this? Apple. We have apple. Where is apple, children? Let's see. A-P-P-L-E, apple. A-P-P-L-E, apple. Can you see this apple? Now we have mango. What is the spelling of mango? M-A-N-G-O. M-A-N-G-O becomes your mango. Now we have last fruit is pear. P-E-A-R, pear. P-E-A-R, pear. Now, which is your favorite fruit? Say why you like it. First in your own language and then in English. Now children, this activity you can discuss with your parents and ask your parents. They'll help you out to do this activity and complete this page in the book with the help of the pencil. So that's all for today children. We'll meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and God bless you all. Thank you.